So the question is, the dotted decimal notation format for the given hexadecimal notation 172A84C8 is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज विल कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड देन फ्रॉम बाइनरी विल कन्वर्ट इट टू डेसिमल. सो हमें आईपी एड्रेस दे रखा है 17.2A.84.C8. हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमारे पास 8 हेक्स डिजिट्स होते हैं जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. वी नो दैट कि हमारा जो एक आईपी एड्रेस होता है IPv4 एड्रेस उसमें 32 बिट्स होते हैं. एंड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन हमारा एक हेक्स डिजिट 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है विच सम्स अप्स टू 32. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 एंड 7. दिस इज नॉट 17. 1 इज सेपरेट एंड 7 इज सेपरेट. सो मैंने यहाँ पे एक बाइनरी और हेक्स डिजिट्स का टेबल बना रखा है. हर एक हेक्स डिजिट की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे दे रखी है. तो हम सीरियल वाइज हेक्स डिजिट बाय हेक्स डिजिट हम यहाँ पे बाइनरी नोटेशन हर एक की लिखते जाएंगे. तो आई राइट इट फॉर यू. सबसे पहले 1 के हमारे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बाइनरी 0001. तो विल राइट है 0001. एंड नेक्स्ट इज 7 के कॉरस्पॉन्डिंग इज 0111. तो हम इसी के साथ लिखेंगे 0111. This makes it 1 and 7. It's written in combined form. Similarly, we'll repeat these steps for further ones. Next is 2. 2 के corresponding it's 0010. 0010. And after that it's A. A के corresponding हमें दे रखा है 1010. तो हम सेम फॉर्मेट में इसी के आगे लिखेंगे 1010. इसके बाद हम सेम रिपीट करेंगे फॉर 84 एंड C8 ऑल्सो. नाउ वी आर सक्सेसफुली कन्वर्टेड हेक्साडेसिमल नोटेशन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी. अब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस रहता है वही सेम हम फॉलो करेंगे. सो लेट्स डू इट. दिस इज 16, 4, 20, 22, 23. I'll write it 23. And this is 32, 8, 40, 41, 42. This is 42. This is 128 and then 4, 132. And last one is 128, 64, 192 and this is 8, 200. या सो हमने सक्सेसफुली हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया एंड देन बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. सो आवर डिजायर्ड रिजल्ट इज 23.42.132.200. सो गोइंग अबव आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Moving towards method 2 for solving the same question, we can now directly convert hexadecimal to decimal. So let's see how to do this. तो हमें IP एड्रेस दे रखा है सेम 172A84C8. सो हमें कुछ नहीं करना है. हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर ईच एंड एवरी ऑक्टेट, इस पूरे एक को हमें पता है IPv4 एड्रेस में हमें इस एक को हम ऑक्टेट बोलते हैं. ये भी एक ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है. सो देयर आर 4 ऑक्टेट्स टोटल इन एन IPv4 एड्रेस. सो फॉर फर्स्ट टर्म इन एवरी ऑक्टेट विल मल्टीप्लाई इट विद 16 to the power 1. Like here is 1, I'll multiply it with 16 to the power 1 and I'll add it. And for the second term in the same octet, we'll multiply it with 16 to the power 0, which means we'll multiply it with 1. 7 into 16 to the power 0, which makes it 16 plus 7, which is
23. For 2a, it will be 2 into 16 to the power 1 plus a into 16 to the power 0. 2 into 16 is 32 plus. So the value of a is 10. Like in this table, after 9, this a is 10, b is 11, c is 12, d is 13, e is 14 and f is 15. So while solving this, I'll take value of a is 10 into 16 to the power 0, which means 1. So this will be 32 plus 10 is equals to 42. So I'll repeat the further steps similarly like I have done in these two. And मैंने एक बार इनको नीटली लिख दिया यहाँ पे. You should all try it for once yourself too. And now अब हम इसको एक IPv4 एड्रेस की फॉर्म में लिख देते हैं. So this is 23.42.132.240. तो आपने देखा होगा जो इससे पिछला मेथड जो हमने यूज़ किया था उसमें भी सेम आंसर आया था एंड इसमें भी एग्जैक्टली सेम आंसर आया है. दिस मेथड इज़ शॉर्ट इफ़ वी कंपेयर इट टू प्रीवियस वन. सो इट्स अप टू यू विच वन इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू एंड वो आप यूज़ कर सकते हो. इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा बी. द लिंक्स फॉर ऑल द PDFs फॉर द क्वेश्चंस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो या यू कैन चेक इट फ्रॉम दैट. थैंक यू.